अभी कल एक शो बोल न्यूज़ पे एक फीमेल न्यूज़ एंकर हैं, उनका अभी उनके एक शो की क्लिप देख रहा था मैं यूट्यूब पे। आपने सवाल पूछा, मैंने ट्विटर पे भी आपको बोल न्यूज़ ऑनलाइन करके ट्विटर हैंडल है, उस पर अपना मोबाइल नंबर टैग कर दिया है, तो आपको पता लग जाएगा। मैं नंबर बोल रहा हूँ 9910 423 405। आपने सवाल मुझसे पूछा, जवाब मैं दे रहा हूँ। पाकिस्तान में जो कुछ भी हो या हो रहा है, वो भारत के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए मैडम, मेरी मर्जी, हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करेंगे। बदमाशी है हमारी। हाँ बिल्कुल है, ये है हमारा कंसर्न। मतलब ऐसा सवाल, ऐसा जवाब दूँ मैं आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा पड़ोसी राज्य है, ठीक है ना, राज्य ही कहूँगा, अब देश तो रहा नहीं है वो। पड़ोस में एक राज्य है, भारत का 38वां राज्य है, और उसके भी जो है हम कई अलग अलग पार्टीशन कर रहे हैं। सवाल पूछा, जवाब भी सुन लीजिए। जब पड़ोसी राज्य, मतलब पड़ोस में बने एक देश को विश्व की वर्ल्ड रैंकिंग में टेररिज्म नेशन कह दिया जाए, ये आपके लिए अफसोसजनक है। आपके लिए, आपको शर्मिंदा होना चाहिए। पाकिस्तान न्यूज़ मीडिया को शर्मिंदा होना चाहिए। Whatever is happening inside the Pakistan now, it's completely it's evidence that there is a completely in Pakistan there is a no system. The Pakistani army is in search to place for themselves. Pakistan's religious power groups are also in search of their place, because it's an Islamic republic. Political lobby is another one who is showing their power. And the fourth one is ISI. Pakistan's intelligence. Means a simple nation is divided into four. Pakistan's army is Pakistan. Pakistan's intelligence Pakistan. Pakistan's political powers Pakistan. Pakistan's religious power groups Pakistan. The suicide bomber theory, Fidain, Atmaghati, Fidain attacks, suicide bomber attacks inside the Pakistan. And you are asking me that why India is having concern. Madam, yes, we do have concern, because you are our neighbor. Anytime you can provoke the war to us,
your political powers forcefully shut down the Samjhauta Express. Forcefully you seize your airspace for Indian flights. In 2 or 3 years back, the IATA and the International Air Traffic Control directly issued a warning to Pakistan. You can't seize the airspace of any nation's civilian airlines. The act was done by the Pakistani government. Was definitely a concern of India, madam. I don't know. Without keeping the facts in your mind, you are asking this question. That is what is the concern of India to whatever is happening inside the Pakistan? Since the Imran Khan's government was in power, as he comes in power, he directly sees the airspace for Indian civil aviation. Was an act according to international law is not acceptable. Whatever, because airspace is not belongs to you only, na? You closed Samjhauta Express. And in secret call, I don't have any problem to take name of Mr. Modi, whether he was a Prime Minister of India also. Because in secret phone call, Imran Khan and Modi was in talk on the shutdown Samjhauta Express to create unrest on border and to create unrest in between between the two nations relation, while your government is ordered to seize Indian civil aviation's airspace. Why should not we use our voice to highlight this act as a terrorism act done by Pakistani government? That's why with a strategic mind, we announced and we forced to step down Mr. Imran Khan. Yes. Your government, your Air Force chased our civil aviation with a fully loaded payload with F-16. It was not a joke. If you, respectable madam, in the beginning I was joking to you. You are very cute. God bless you. But you are in a BolNews. No, because you must have to read the first read the reality. That's why we used international law and international power to forcefully to let end the Pakistan. No, you will not. You forcefully, a Pakistani Air Force, the Mr. Bajwa was involved. You can't, madam. It was an act according to international law is a terrorism.
Your Pakistani jets, yes, was chased our jets, passenger jets. It was an act according to international law is a terrorism. We will not allow you to do this, madam. And you are asking what is the concern of India? This is the concern of India. International air traffic route is our rights, madam. You can't chase us on international passenger traffic route with a heavy payload loaded jets. F-16. It's not a joke. And since here Mr. Modi was not saying even a word, that's why we here forcefully removed the Modi from the post. Yes. Because we will not let you allow to do another Kandahar. Your Pakistani military general was in mood to forcefully ground our passenger jets. It was an act done by the Mr. Imran Khan. Whatever was happening inside the Pakistan is just because of your act and your interest in the terrorism. You should have to concern this. How can you avoid this? How can Mr. Maryam Nawaz Sharif avoid this? How can Mr. Bajwa can avoid this? No, we will not let you forget this incident. Day by day, the neighboring nation is acting like a terrorist. That's why my efforts, because of the ICJ respectable honorable court, I definitely like to bow my head. In front of them, they announce Pakistan as a terrorist nation. No, this is not. So many times your Pakistani PIS jet was able to fly over from the India. We don't have any problem. This was act. Yes, madam, this was an act done by the Mr. Imran Khan's government. And I was the person who designed the theory to throw him out from your parliament. Yes. He is a terrorist. Your prime minister is a terrorist. You are saying पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? मैडम नहीं है हमारे लिए जरूरी. But you don't have any rights to violate international law. You violating continuously. We will not count it that whether was happening on the LOC line of control and LSE line of actual control, it was never a concern. But chasing of Indian passenger jet with a heavy payload F-16 jet of Pakistani Air Force was really a big concern for us. Yes. I tweeted so many times to Pakistani government. I'm warning you. Open the airspace. Open the airspace. But they were not listening. Okay? We will use international law. We will go to ICJ. And because of ICJ, respectable honorable court, they allowed to throw out Imran Khan from the politics. If the Maryam Nawaz Sharif and other politicians and your wonderful lawyers are not able to speak even a word because they forget it. They are thinking that it was not a concern. Yes, it is a concern. You violate international air traffic control law. They will not allow to create Pakistani army, any air force. And now you are going to take the help of Israel, Jewish, Russia. Go for it. We don't care.
You know how to teach the good lesson. First we will go to the ICJ. If any time the Pakistan will think to open any kind of military option, we have enough army to reply you. But thanks for the NATO. They throw you out from the NATO list also. Yes. Thanks for the NATO. I'm repeating it again. Thanks for NATO. Day by day, you're getting down. Yes, you all are getting down. And that's why I opened a military option. I separated Pakhtokhwa and the POK because I need airspace. Yes, it's an international law. The flight can only fly over the land, not over the sea. Because once, any time the flight will be damaged by anything, any accident, then we will not able to trace them in the sea. This is international law. We must have to take our flight in air over the land. Without knowing the fact, the Pakistani media is debating with me. Myself, Hitesh Mandal, Twitter handle @Hitesh Rewan, President of India 3760, and Prime Minister of India 3236. ICJ announced me. And you are converting this total complete fight in a religious mode. Go for it. We don't care. No, we don't care. आप लोग, आपके मिलिट्री जर्नल्स अचानक भारत के पैसेंजर जेट्स जो कई वर्षों से है, आप वो रास्ता बंद कर देते हैं और हमारे पैसेंजर जेट्स को आपके F-16 पूरी तरह से लोड होकर के चेज करते हैं। यह अपराध है मैडम, अपराध। अंतर्राष्ट्रीय वायुयान नियम जो भी हिंदी में बोलते हो, इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोल लॉ, यह अपराध है। इट्स अ क्राइम and you did it so many times. इमरान खान के सत्ता में आते ही समझौता एक्सप्रेस बंद। यहां तक कह रहे कि भारत से बह के आने वाली नदी का पानी नहीं पिएंगे, प्यासे मर जाएंगे। वो आपकी इच्छा है। मैंने कई बार ट्वीट करके बोला आप एयर स्पेस खोलिए, नहीं मानते। मैडम, पैसेंजर जेट्स जमीन के ऊपर ही उड़ेंगे, समुद्र पे नहीं। कानून है। कल को अगर जहाज किसी वजह से क्रैश हो जाए, पानी में चला जाएगा तो नहीं बचा पाएंगे किसी को। जमीन पे गिरने के बाद ब्लैक बॉक्स मिल जाता है। ब्लैक बॉक्स मिलने की वजह से पता लगता है किस वजह से हादसा हुआ है। ये नियम है। और पाकिस्तान हमारा एयर स्पेस बंद कर देगा। मैंने लड़ा केस आईसीजे में और जीता केस। खुद आपके लॉयर्स ने एयर स्पेस खोलने से मना कर दिया। तब आईसीजे ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देते हुए आतंकवादी देश घोषित किया। उसके बावजूद जब आपने एयर स्पेस नहीं खोला, तब हमने मिलिट्री ऑप्शन ऑन किया। और जहां से हमारा एयर जेट, हमारे पैसेंजर जेट्स जाएंगे, उसके नीचे की धरती हमारी होगी। मैंने कहा आईसीजे में, सर अगर इन्होंने एयर स्पेस नहीं खोला तो धरती पे पाकिस्तान नहीं रहेगा। बस हमारा क्या कंसर्न है? क्यों नहीं होगा मैडम? हमें धरती पे पाकिस्तान से कोई ऐतराज नहीं था। आप एयर स्पेस कैसे बंद कर देंगे? आप बुला लो जिसको बुलाना हो। कौन है बाजवा और क्या है वो? कितना ताकतवर, हम भी तो देखें। मैंने अलग कर दिया पख्तूनख्वा पाकिस्तान से, इस्लामाबाद, लाहौर। रहना है रहो, नहीं रहना मत रहो।
वाह भाई वाह। आपने भारत कश्मीर से होकर अफगानिस्तान जाने वाली रोड पे आपने हजारा तालिबान और अलकायदा के आतंकवादी बैठाए, बिल्कुल बैठाए। मैं आज तालिबान को आतंकवादी शब्द बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि पहले तालिबान ने माफी मांगी हमसे और आतंकवाद का रास्ता छोड़ा। जो पता नहीं कितने कितने वर्षों पुरानी रोड है, जो अफगानिस्तान से होकर के कश्मीर में सीधी आती है, वहां से आपने आतंकवादी भेजने शुरू किए। ये बाजवा की हरकत थी, तब हमने उस रोड को अपने कब्जे में लिया है। कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी किए जा रहे हैं। मान ली बात आपकी, जवाब भी हम देना जानते हैं, फिर बहुत अच्छे से जवाब देना जानते हैं। बलूचिस्तान मैंने अलग किया पाकिस्तान से, पूरा पाकिस्तान डिसमेंटल कर देंगे, ऑर्डर है हमारे पास। बस आप आतंकवादी देशों की लिस्ट में आ चुके हैं और बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा, लाहौर, इस्लामाबाद भारत का राज्य है, बिल्कुल है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोग क्या सोचते हैं। मैं अपना काम बखूबी करना जानता हूं। यह है भारत का कंसर्न, पाकिस्तान में था और हमेशा रहेगा जब तक पाकिस्तान है। शायद ज्यादा समय के लिए नहीं है। आप लोग रहना है रहिए, नहीं रहना मत रहिए। एक आर्मी क्या बना लिया आपने, आप हमारे पैसेंजर जेट्स को चेज करेंगे। ग्राउंड कराएंगे, क्यों? है दम बोल न्यूज में मैडम, तो ये न्यूज दिखा देना, ये रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे बात करके। पढ़ना सीखे पहले।